Hello students, welcome back to my channel. We are preparing for English Literature paper number 2 for upcoming SET, NET, TGT, PGT examination. Okay. So ऐसे ही important questions के लिए मेरे चैनल को like करो, share करो, subscribe करो. And it is the right way to practice the question answer to tackle the examination. Let's see the today's first question. So read a first question kindly here. और हमें एक प्रॉपर वे में अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आ रहा है सो रीड ट्वाइस द क्वेश्चन. ओके. द सबटाइटल ऑफ द सैमुअल बेकेट्स प्ले वेटिंग फॉर द गॉडट. वेटिंग फॉर द गॉडट का हमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है. अ कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, ट्रेजिकॉमेडी इन 2 एक्ट्स, अ ट्रेजेडी इन 2 एक्ट्स, अ सटायर इन 2 एक्ट्स. सैमुअल बेकेट का मास्टरपीस द थिएटर ऑफ द absurd, वेटिंग फॉर द गॉडट was published originally as a tragedy in 2 acts. तो ये था a tragedy in 2 acts. Option number C is correct. Next question. Identify the correct statement regarding epic theatre. Epic theatre का सही statement हमें पहचानना है. Okay, read the statements. Epic theatre is a response to Richard Wagner is the idea of Gesmark Pointberg, which intend each piece of the art to be composed of other form. Then verb from dung effect made the popular to the Bertolt is one of the characteristics of epic theatre. Epic theatre always has a linear narrative, which means that it is event happen in chronological order. So here option A हमारा correct है, second भी correct है, तो हमारा B सही हो जाएगा. तीसरा हमारा false है, क्योंकि कभी भी हमारे जो इपिक थिएटर डिलिबरेटली अवॉइड करते लीनियर और क्रोनोलॉजिकल प्लॉट को, इंस्टेड ऑफ इट वो क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेड एंड एपिसोडिक स्ट्रक्चर देते हैं. ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट, एबे थिएटर का दूसरा नाम हमें बताना है. ग्लोब थिएटर, लेडी ग्रेगरीज थिएटर, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड. सो द National Theatre of Ireland is the correct answer. Abbey Theatre, W.B. Yeats and Lady Gregory in Dublin. The Abbey Theatre is formally recognized as the National Theatre of Ireland. Next question. Question number 4. If you like my videos, don't forget to like, share and subscribe it. And for the new upcoming notifications, hit the bell icon. Okay, now in the poem presentment or the presentation or the presentiment is that long shadow on the lawn. Presentiment is that long shadow on the lawn. Emily Dickinson used the shadow as dash to define the presentiment. Simile, metaphor, hyperbole, allegory. And the correct option is metaphor. In the opening line, Emily Dickinson का ये direct comparison वो करती है. As like as उन्होंने नहीं यूज किया है. Presentiment is that long shadow of the lawn. Identify the correct statement regarding teaching of formal grammar. Formal grammar का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. Formal grammar can be taught by the inductive and deductive methods. Inductive method gives example first and then frame rules with the pupil's help. And the third option, deductive method tells the rule to the pupil and provide the example of illustrating the rules. Okay, what is the question? हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचाना है रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर. जब हम फॉर्मल ग्रामर पढ़ाते हैं, है ना, तो फॉर्मल ग्रामर कैन बी टॉट. इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड हम यूज करते हैं, ये सही है. इंडक्टिव मेथड गिव्स द एग्जांपल फर्स्ट एंड देन फ्रेम द रूल्स. प्यूपिल्स पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर रूल्स बनाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है. इंडक्टिव मेथड कहते हैं हम इसे, पहले एग्जाम्पल फिर रूल्स. और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले रूल्स रट लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो तीनों भी सही है. सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एबिलिटी टू लोकेट द टॉपिक सेंटेंस of a paragraph in specified time is essential in dash reading. Silent reading, intensive reading, extensive reading, deep reading. Reading के types पता होने चाहिए हमें. तो देखो, ability to locate the topic sentence of the paragraph. Specified time is essential.
तो इसे हम करेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग. सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्विकली लोकेटिंग अ टॉपिक सेंटेंस और स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स falls under the extensive readings, specifically scheming, scanning techniques. Okay. Now, the question number 7. Alternation between two or more languages or languages varieties in the context of a single conversation is called code switching, code meshing, okay, hybridization, bilingualism. तो अल्ट्रेशन करते हैं हम alteration between two or more languages varieties and it is called the code switching. इसे हम कहेंगे code switching. In linguistic, code switching रेफर करता है practice of alternate between two or more languages. सिंगल कन्वर्सेशन में मैं मराठी यूज करूँ, हिंदी यूज कर रही हूँ या हिंदी इंग्लिश यूज कर रही हूँ, then it is the code switching. Involved Whitman out of the cradle, endlessly rocking, the line from your memory's sad brother refers to the boy's friend, the bird, the boy's lost brother, the boy. And the correct answer is the bird. It is the Walt Whitman's elegiac poem, Out of the Cradle, Endlessly Rocking. The boy listens to the mockingbird mourning, his lost mate. Okay. Next question. Question number 9. Relics of Ancient English Poetry is the collection of ballads collected, published as or published by. So it is published by Thomas Percy. Reliques of Ancient English Poetry is a highly influential collection of historical ballads compiled, edited Bishop Thomas Percy. Next question. Question number 10. John Haywood, the play called the 4PP is morality play, miracle play, interlude, tragicomedy. So it is a interlude. जॉन हेवुड का द प्ले कॉल्ड द 4PP एक 1520 का क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है. ट्यूडर इंटरलूड. तो इंटरलूड अ शॉर्ट विटी ड्रामेटिक फार्स होता है, ट्रांजिस्टेड या इंग्लिश ड्रामा फॉर मोरालिटी प्ले टुवर्ड्स द सेक्युलर कॉमेडी. क्वेश्चन नंबर 11. Viola and her brother Sebastian in 12th night are separated in shipwreck on the coast of. कौन से शिप में, मतलब शिप में वो जा रहे थे, तो शिपरेक की वजह से वो और उसका भाई अलग हो जाते हैं. तो सेबेस्टियन शिपरेक में अलग हो जाता है. तो उस कोस्टल एरिया का नाम हमने बताया, तो इलेरिया. ओके, इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज कंपाइल्ड बाय. तो फर्स्ट फोलियो कंपाइल किया था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल. 7 years after the Shakespeare death, his fellow actors and friends, John Hemmings and Henry Condell, compiled 36 plays, published the first folio in 1623. तो 1623 में पहला फोलियो शेक्सपियर का इन दोनों ने, बी ऑप्शन करेक्ट है, पब्लिश कराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन इज करेक्ट क्रोनोलॉजी. ठीक है, तो क्रोनोलॉजी लगानी है. जॉर्ज मेरेडिथ द इगोइस्ट, जेम्स जॉयस का एलिसिस, रिचर्डसन का पैमेला, लॉरेंस का ड्यूरेल बाल्थजर्स. ओके. रिचर्डसन तो अभी इस पे देख लो, किनली अगर हम देखें तो एग्जैक्ट पब्लिकेशन अगर हम बताने जाए तो हमारा सबसे पहले आएगा रिचर्डसन का पैमेला. कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. फिर आएगा जॉर्ज मेरेडिथ, तो डी ऑप्शन. पहले आएगा पामेला, फिर आएगा द इगोइस्ट, देन जेम्स जॉयस का इलुसिस एंड लास्ट में आएगा बाल्थजर, लॉरेंस ड्यूरेल्स का बाल्थजर. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. अ नॉवेल विच इज द नरेटिव इज कैरिड फॉरवर्ड बाय द लेटर रिटन बाय वन और मोर ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड नॉवल. तो इट इज कॉल्ड द एपिस्टोलरी नॉवल. एक नरेटिव फॉर्म होगा, कैरी फॉरवर्ड बाय द लेटर्स. The rhyme scheme in which of the first and third line of the tracet rhyme together and the middle one rhyme with the first and the third succeeding tracet is called. Okay, terza rima, octava rima, limerick, sustain. And the correct answer is terza rima. Terza rima is poetic structural rhyme scheme famously utilized by the Dante Alighieri
डिवाइन कॉमेडी में उन्होंने पहले यूज किया था इट फॉलो द इंटरलॉकिंग ट्रिपलेट, जैसे ABA, BCB, CDC एंड DET. ओके,